In the previous video, we have completed the structure of adrenal glands. And now in this video, we are going to learn the hormones of adrenal cortex. तो हमें पता चला है कि the hormones which are produced by the adrenal cortex are commonly known as corticoids. उसे क्या कहते हैं? Corticoids. And corticoids कौन सा function करते हैं? Depending on that, there are three types of corticoids. One is glucocorticoids, second one is mineralocorticoids, and third one is sex corticoids. Right. So first one is क्या कहना है? The hormones which are produced by the adrenal cortex are commonly called as क्या कहते हैं? Commonly called as corticoids. So hormones of adrenal cortex commonly known as corticoids. उसे क्या कहते हैं? Corticoids. अब डिपेंडिंग की corticoids कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? There are three types of corticoids. One is glucocorticoids. Glucocorticoids. Then mineralocorticoids. And last one is sex corticoids. Depending on which type of functions they regulate in our body. हमारे बॉडी में वो किस तरह का फंक्शन रेगुलेट करते हैं. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमें पता है कि glucocorticoids is the corticoids which are synthesized and produced by the middle zona fasciculata of adrenal cortex, and mineralocorticoids is produced by the zona glomerulosa, and sex corticoids is produced by zona reticulans. Right? अब देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब द कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एंड द कॉमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी इज कॉर्टिसोल. तो कौन सा? द कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन corticoids involved in carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism उसे क्या कहते हैं? Glucocorticoids. And which is common glucocorticoids in our body? The cortisol is common glucocorticoids in our body. हमारे बॉडी में common glucocorticoids कौन सा है? That is cortisol. Second mineralocorticoids. So किसको mineralocorticoids कहेंगे? The corticoids which regulate electrolyte and water balance. Electrolyte and water balance in our body. उसे क्या कहेंगे? We call it as mineralocorticoids. Right? And कौन सा common mineralocorticoids in our body? तो aldosterone. That is the hormone is the common mineralocorticoids in our body. And then sex corticoids, the steroid hormones, right? Large amounts of sex hormones, sex corticoids. So first, cortisol हमारे body में क्या काम करता है कि what is the role of the function performed by the cortisols, that is the glucocorticoids involved in carbohydrate metabolism, right? So first one is this cortisol क्या करता है? Cortisol stimulate gluconeogenesis. क्या करता है? Stimulate gluconeogenesis, proteolysis, and
लाइपोलाइसिस इसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करना मतलब बढ़ावा देना। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज स्टिमुलेट करती है। प्रोटियोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। लाइपोलिसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, लाइपोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। So this stimulate the gluconeogenesis, that is synthesis of glucose, breakdown of protein, proteolysis, and breakdown of lipids, that is lipolysis। अब देखो प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन होगा तो हमें मिलेंगे अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स कहाँ जाएंगे? सेल में जाएंगे। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रोटियोलिसिस, प्रोटियोलिसिस को रोकने के लिए ये क्या करेंगे? इनहिबिट inhibit cellular uptake, मतलब जो सेल अपटेक करते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब सेल को कहेंगे कि सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, उसको ये डिबेट करेंगे। सेल को कहेंगे कि जितना लगता है उतना ही लो, या कम अमाउंट में अमाइनो एसिड यूज करो, सो दैट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकंड वन इज इट मेंटेन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या करती है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन को मेंटेन करती है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट फंक्शनिंग, एंड सेकंड वन इज द किडनी फंक्शन। थर्ड, इट प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। क्या करती है? इट प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। Right? Another, it stimulates the RBC production. So these are the functions of cortisol, and that is glucocorticoids. So क्या क्या? It produces anti-inflammatory reactions. Produces anti-inflammatory reactions and suppress इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या करती है? सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। अलोंग विद दैट दिस, यहां पे लिखता हूं क्या? स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है। सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय glucocorticoids, cortisols, stimulate gluconeogenesis, synthesis of glucose, breakdown of protein, proteolysis, breakdown of lipid, lipolysis। अगर प्रोटीन प्रोटियोलिसिस को रोकना है तो सेल को क्या कहती है? इनहिबिट द सेलुलर अपटेक, यानी लेना, एंड यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल करना, ऑफ अमाइनो एसिड्स। राइट? देन कार्डियोवैस्कुलर, दैट इज द हार्ट फंक्शन एंड किडनी फंक्शन को मेंटेन करती है। Produces anti-inflammatory reactions and suppress the immune response। हमारा immune response suppress भी करता है। Stimulate RBC production। So this is all about the cortisol, glucocorticoids, corticoids involved in carbohydrate metabolism। Right? The second one is the corticoids which regulate the electrolyte and water balance, जिसे कहते हैं mineralocorticoids, and which is the common mineralocorticoids in our body, तो aldosterone। तो aldosterone क्या करता है? Aldosterone acts on the renal tubule of the kidney। renal tubule जो है किडनी का पार्ट, act on the renal tubule and stimulate, क्या करता है? Aldosterone acts on renal tubule and stimulate, क्या करता है? And stimulate the water and stimulate the reabsorption,
stimulate the reabsorption reabsorption of इसका reabsorption of water and sodium right. So first aldosterone का काम क्या है to act on the renal tubule and stimulate the reabsorption of water and sodium वहां से reabsorb करता है renal tubule is the part of the nephron and nephron is the structural and functional unit of kidney वहां से right and दूसरा करता है excretion of potassium and phosphate ions potassium and phosphate ions so therefore इसलिए it is responsible to regulate the water and electrolyte balance of the body so it is responsible to maintain क्या maintain करता है maintain water and electrolyte balance of the body water and electrolyte balance of the body दूसरा क्या काम करता है कि हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है उसका बैलेंस करता है इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है ऑस्मोटिक प्रेशर करता है देन इट मेंटेन द ब्लड प्रेशर इट मेंटेन द ब्लड प्रेशर सो दीज आर द फंक्शंस क्या कहते हैं these are the functions performed by the mineralocorticoids that is aldosterone mostly acts on the renal tubule and stimulate the reabsorption of water and sodium and excretion of potassium and phosphate ions. Therefore, it is responsible to maintain the water and electrolyte balance, body fluid volume or body fluid balance, osmotic pressure, and blood pressure. Right? So this is mineralocorticoids that is aldosterone. Then third category that is sex corticoids. Yeah, the small amounts of adrenal cortex small amounts of hormones are produced by the adrenal cortex and उसे कहते हैं sex corticoids. Right? Sex small amount of steroid hormones उसे क्या कहते हैं steroid hormones and that is sex corticoids. तो इनका काम क्या है? What is the role of this? The function of this it regulates the growth of facial hair. It regulates the growth of axial hair. It regulates the growth of pubic hair at the time of puberty. जब puberty आती है तो facial hair की growth को stimulate करती है, axial hair की growth को stimulate करती है, and pubic hair stimulate. So small amount of corticoids are produced by adrenal cortex and उसे कहते हैं steroid hormones और sex corticoids. उसे क्या कहते हैं sex corticoids. तो क्या काम करता है? It stimulate the growth of first facial. It stimulates the growth of facial hair. Second, axial hair. And third one is pubic hair. Growth. It regulates the growth of facial hair. It regulates the growth of or stimulate, not regulate. It stimulates the growth of facial hair, axial hair, and pubic hair. Curve at the time of puberty. Curve at the time of puberty. Puberty मतलब maturity, right? Male can produce the sperms and female can produce the eggs. That is the puberty, right? So this is all about the sex steroids. Mostly stimulate the growth of facial hairs, axial hairs, and pubic hairs at the time of puberty, right? So this is all about the hormones of and that hormones all about the hormones of the adrenal
Now one point remain, that is, if there is a underproduction of these hormones, what underproduction मतलब less production of all these hormones. कौन से? Corticoids. Corticoids मतलब the hormones which are produced by the adrenal cortex, उसे commonly हम कहते हैं corticoids. अगर उसका प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन है, अंडर मतलब लेस, अंडर प्रोडक्शन ऑफ corticoids, क्या होगा? What happen if there is a underproduction of corticoids? Right? इसको मिटाता हो, underproduction of the hormones of the adrenal cortex उसे कहते हैं corticoids. तो क्या होगा? It alters carbohydrate metabolism. क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चेंज होगा. अल्टर मतलब चेंज होगा. कब? When there is a under production of corticoids, alters the carbohydrate metabolism. Results it into, उससे क्या होगा? उससे होगा fatigue, acute weakness, and resulting it into a disorder, and that is Addison's disease. क्या होगा? Addison's disease. So underproduction of the corticoids alters the carbohydrate metabolism, results it into the fatigue, acute weakness, results it into the Addison's disease. So this is all about the hormones of the adrenal cortex. In the next video, we'll discuss the hormones of the adrenal